Supreme Court. Take 2 minutes rest, pani pani ଟିକେ ପିଅ କଣ କର, ଯଦି କିଛି doubt ଅଛି ପଚାର, otherwise we will go to Supreme Court. Okay. Good evening, sir. Chapter, it will also take some time. Hello. हाँ Good evening, sir. Actually, ଆମର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଥିଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯଦି କିଛି ବି ଭାୟୋଲେସନ କରନ୍ତି ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପନିଶମେଣ୍ଟ କରିହବନି କି ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରିହବନି ତ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ଯୋଉଟା ଯୋଉ କେସଟା ହେଇଛି କାଲିର ନ୍ୟୁଜରେ କି ଆଜିର ନ୍ୟୁଜରେ ଥିଲା ଆମର ସେଇଟା ତ ସେଇ କେସଟା ଆମେ କଣ କରିବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଇଁ? କଣ ହେଇଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ହେଇଛି। ସେ ଆମର ଜଣେ ଓମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସରେ ଜଣେ ଓମେନ୍ ଥିଲେ, ସେ ଜବରେ ଥିଲେ ତ ତାକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରହିଛି। ହଁ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖ ତମେ ପଚାରୁଛ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରିମୁଭାଲ କେମିତି ହବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରିମୁଭାଲ ପିଓର ଆଣ୍ଡ ପିଓରଲି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସେଣ୍ଟର ଡିସିଜନ। ଓକେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ସେଣ୍ଟର ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ କି ତାଙ୍କେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ କି ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାହିଁଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଓନ୍ଲି କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଜୟଦୀପ ଧନକର ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଦେର୍ ୱାଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। स्टेट गवर्नमेंट आउ गवर्नर भितर कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट हुए होउथिला, बट स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी एक्शन. स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट take any action against governor. Only they can, what they can do is they can go and complain, they can go and file a case in some police station, or they can go and do fight in court. Okay, कि आमर ए डिसीजन को अटके दोचंदी, एटा कर दोचंदी, सेटा कर दोचंदी. All these things he can do, the state government can do, but they cannot remove the governor. जदि सेंटर चाहिबो ताहले का से गवर्नर को बाहर करि परिबे, दैट्स इट. आउ किछि माने एक्स्ट्रा तांग पय नाही. इवन यू कैन नॉट फाइल ए सर ସେମାନେ ଜୁଡିशियल इम्यूनिटी ପାଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା କୁ ଡିସାଇଡ କରିବ ଏବେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କି ହବ କି ନାହିଁ। सर ए जो तांको ऊपर किछि भी करी हबनी जो जिंसटा तो सेମାନଙ୍କୁ ତ ଜୁଡିशियल इम्यूनिटी मिलिछि तो ସେଇଟା କୁ ଏବେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯାହା ଡିସାଇଡ କରିବେ। सी मु एडा कहूछि जे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कोन, सुप्रीम कोर्ट कोन डिसीजन आनिबो दैट इज सेपरेट थिंग, बट राइट नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज गवर्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Okay, not by the state government. State government cannot take any action. तमे जोटा कहूछ जुडिशियल इम्यूनिटी, दे हैव द जुडिशियल इम्यूनिटी. तांकर जो पीरियड रे से थांती गवर्नर, यू कैन नॉट arrest them by a criminal case. Okay, you cannot put criminal case against them, you cannot arrest them, and even if तांको तमे civil case रे arrest करि परिबो with 14 days of notice. जदि civil case तमे किछि तांकर against रे पाउछो, then you can file a civil case, but any kind of criminal case you cannot file and you cannot arrest. Okay, by the time, till the time they are in the governor post, that immunity is given by the constitution itself. Okay, constitution रे तांग पई judicial immunity अछि, जोडा कि तमे कहउछो criminal और civil immunity both अछि, but civil case रे you can file a case. Okay, you can take action, but in case of criminal, जेमति एबे तमे कहउछो sexual harassment हेछि, तो एटा कोन criminal case होबा कथा, but you cannot arrest that person unless and until he is in the governor's position. Right? Thank you, sir. आउ फ्यूचर रे सुप्रीम कोर्ट किछि भी कहि पारे, दैट इज ए सेपरेट थिंग. सुप्रीम कोर्ट कहि पारे कि नो 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 विल चेंज दिस, सेटा किछि भी हे पारे, बट राइट नाउ दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. ओके, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट विल हमें पढिया सुप्रीम कोर्ट. एटा के बड़ चैप्टर, इट विल टेक मे बी 1 hour समथिंग हला. एटा तमे बुझिले सेम थिंग. हाई कोर्ट विल बी इजी, हाई कोर्ट भी सेम थिंग. किछि किछि पावर एक्स्ट्रा में भी हाई कोर्ट रछि. फॉर एग्जांपल रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट रो टिक अधिका. ओके, देन इंडिया किछि किछि छाडी बाकी ऑलमोस्ट सेम. सुप्रीम कोर्ट पढिबा. सुप्रीम कोर्ट से कोन कहछ, अनलाइक एटा को पार्ट रे अछि, Right. Unlike the American constitution, the Indian constitution establishes an integral judicial system. Okay, America रे कोन अछि, सेपरेट.
स्टेट रो तांकर कोर्ट अलगा ओके और तांकर फेडरल कोर्ट अलगा बट आमर कोन इंटीग्रल जुडिशियल सिस्टम माने सुप्रीम कोर्ट ता तळे ही अछि हाई कोर्ट ता तळे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ओके आमर एट कोन एडु तमे फेल ले एडु अपील करि परिबो एडु फेल ले एडु अपील करि परिबो okay in every case but in America it's not like that certain cases you cannot go to Supreme Court that will be decided the final authorities tankar state government ro court okay जोड़ा को हम हाई कोर्ट कहउछन सो हमर होची इंटीग्रल जुडिशियल सिस्टम तांकर होची जुडिशियरी सिस्टम इज सेपरेट ओके तो हमर इंटीग्रेटेड कोन सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप and higher courts below it and there are hierarchy of subordinate courts okay this single system of courts adopted from एटा भी मन रखो if there is a question in mains रे कोन हुए बेल आसे अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम इंडियन जुडिशियल सिस्टम कंपेयर करो ओके तो तमे जिंस जानिथिया दरकार कि डिफरेंस कोन राइट okay the single system of courts okay adopted from the government of India act 1935 this is also important remember it am court वाणी चंदी provision da जो integrated judiciary system government of India act 1935 okay it enforces both central law as well as state law हमर supreme court जो अछि हाई कोर्ट जो अछि एमाने सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ सबु सहित डील करंती right in US on the other hand the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws are enforced by the state judiciary okay there is a separate judiciary system in USA okay which is called as double system of courts in USA right so India although a federal country like USA has a unified judiciary system and one system of fundamental law and justice okay amar hochi unified judiciary system integrated judiciary system the Supreme Court of India was inaugurated on January 28 1950 okay this is also important because आजिकल से बहुत फैक्ट भी पचारुचंती okay तो this also you remember कि हमर जो सुप्रीम कोर्ट केबे एस्टैब्लिश हेछि इनागुरेट हेछि जनवरी 28 1950 you just remember ता गुरे एटा कोन थिला फेडरल कोर्ट एटा केबे आस्थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओके जनरली हम कोन भूल करंती हमकु लागे कि सुप्रीम कोर्ट आसी ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे हमर आस्थिला फेडरल कोर्ट okay the court that name is changed to Supreme Court in 1950 okay this is also important you have to remember then article 124 to 147 deals with Supreme Court okay and this is under part 5 okay Supreme Court organization independence jurisdiction power procedure all these things are dealt in article 124 to 124 to 147 right and parliament is also authorized to regulate their organization their independence okay parliament चाहिले law बने कि तांकर रिट jurisdiction को बढ़ाई परिबो तांकर पावर ऑफ अपॉइंटमेंट जो अछि प्रोसीजर को चेंज करि परिबो ओके किछि पावर पार्लियामेंट को दियाइस टू रेगुलेट एटा तमे मन रखो दिस इज नॉट प्रेसिडेंट ओके दिस इज पार्लियामेंट विल ऑथराइज टू रेगुलेट सर्टेन थिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट then composition तांकर कोन जजेस मानकर composition केमति कोन रुहे and तांकर appointment केमति रुहे okay this is important at present supreme court consists of 34 judges एडा मन रखो बहुत फैक्चुअल जिंस आजिकल से माने पचार छथि so this you remember केबे केतरा जज अछथि 34 including the chief justice of India okay एडा केबे बढ़ाइछि 2000 आई थिंक 18 या 19 रे बढ़ाइछि 19 रे गोटे एक्टर बढ़ाइछि okay and originally the strength of the supreme court was at 8 एटा भी मन रखथा ओरिजिनली केते स्ट्रेंथ थिला 1950 रे 8 तापर सक्सेसिवली बढ़ाइछि और 1956 60 ओके ए सबरे नंबर बढ़े नाउ इट इज 34 एंड इंक्लूडिंग सीजीआई ओके अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एटा मु तुमको जस्ट स्टोरी सुनै दोछि एटा रे लिखाइछि फर्स्ट केस सेकंड केस कंट्रोवर्सी ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ द अपॉइंटमेंट इज जस्ट ए चार लाइन पढो मु तुमको बुझे देबी ही शुड the president who is appointing the judges president okay first of all who is appointing the judges president the judges of the supreme court are appointed by the president this statement you remember okay this is important ki appoint karandi president not parliament okay second thing is how there is a system called collegium system ebi joda chali chi amaro okay tumku bujhai dochi there is a collegium system okay this collegium system includes CJI
and 4 senior most judges of Supreme Court. Okay, yanku neki tiyari hichi collegium system. Okay, the president, he means the president should consult a collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court, and even if 2 judges gave an adverse opinion, he should not send the recommendation to the government. Okay, so kemiti jae gote collegium achanti 5 member body. Okay, 4 senior most judge plus CJI semane kon karibe ଦେଖିକି ମାନେ ସିନିୟରିଟି ଦେଖିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ନାଁ, ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ନାଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ଓକେ, ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ନାଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ଓକେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ। ଦେନ୍ ଦ ଦ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍। ଓକେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ଦେନ୍ ଯାହା ନା ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ତାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାହେବ। Then president will finally appoint. This is the procedure. This is called as collegium system. Okay, 2014 କ'ଣ ହେଇଥିଲା, this 99th amendment act ଆଣିଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ସିଏ ଫର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁଡିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଶନ ଆକ୍ଟ 2024। ଓକେ, ଦିସ୍ ୱାଜ 99th amendment constitutional amendment act। ଏଇଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ଏ ଯୋଉ କଲେଜିୟମ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଆକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲା ଲ ମିନିଷ୍ଟର, ଓକେ, and prime minister, all them should be included in a committee। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲା ଗୋଟେ କମିଟି ବନିବ, ସେଇଥିରେ 3-4 ଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିବେ ଆଉ 3-4 ଜଣ ଜୁଡିସିଆରୀ ରହିବେ। they will decide, they will propose the name to the central government, then it will go to the president and judges will be appointed। ତାକୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା null and void। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଲା this will hamper the independence of judiciary। Okay, if politicians or executive will interfere in the selection of the judges, it will hamper the independence of the judiciary। Okay, so that was declared as unconstitutional, okay, and void by the Supreme Court। So again ଆମର ସେଇ ପୁରୁଣା କଲେଜିୟମ ସିଷ୍ଟମ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଯୋଉଟା କି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ and 4 senior most judges, they will propose the name to the government। Okay, government will, I mean the cabinet will decide, then finally president will appoint। this is the procedure right now। ठीक ଅଛି, ଏटा पूरा स्टोरी से ही लिखा है एटी। ओके, देन क्वालिफिकेशन जजेस मानकर कोन। ओके, a person to be appointed as a judge of the Supreme Court should have the following qualifications। First of all, he should be a citizen of India। Okay, and he should have been a judge of a high court either for 5 years, okay, or he should have been a advocate of high court for 10 years, okay, or he should be distinguished jurist as opinion by the president। Okay, either mane, first of all he should be a citizen, second thing is either he should be a judge of a high court for 5 years, or he should be a advocate of high court for 10 years, or he should be a distinguished jurist। তিনটার কোহলে গোটে condition with citizenship of India, then he is eligible to be the judge of Supreme Court। Okay, তো এটা ଗୋଟେ catch কোন ଅଛି দেখো, constitution has not prescribed a minimum age like we have studied for president, for governor the minimum age was 35, right? But for Supreme Court judge there is no minimum age। this is important। Okay, এটা মনে রাখো কি there is no minimum age, only there is a retirement age। there is a maximum age that is 65, আমি দেখিব আগুকু। Okay, the judge should retire, but remember there is no minimum age। Okay, only he should be a citizen of India and he should have either of the 3 qualifications। Okay, either he should be a judge or a advocate or a distinguished jurist। then oath, Supreme Court ର judge କିଏ oath କରନ୍ତି? A person appointed as a judge of the Supreme Court before entering his office has to make and subscribe an oath or affirmation before the president, okay, or some person appointed by him for this purpose। Okay, so this is also important, who will give oath to the judge? President। Okay, then see कौन कौन oath नेबे, this is not important। Okay, salary and allowances एडारे इथरे भी किछि मन रखियार नै, खाली एतकी मन रखो
all these things are determined by the parliament, okay, not president. देखो एटी confusion कौन किसी किसी जिनस parliament करुच्ची किसी किसी जिनस president करुचन, okay. Appointment will be by president, oath will be by president, but their salaries and allowances will be decided by parliament, right? This difference you have to remember. कारण एग्जाम रे जो क्वेश्चन आसीबो ना प्रीलिम्स रे तुमको बहुत कंफ्यूज लागिबो वेदर इट इज प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट. सो क्लियरली ताकू नोट रे या तो कोठे लिखिक रख कि प्रेसिडेंट कोन कोन करूचंदी, पार्लियामेंट कोन कोन करूची. ओके. देन टेन्योर तांगर टेन्योर केते वर्ष थाए कोन एंड से मानु केमिति रिमूव करा जाय. ओके. Constitution has not fixed the tenure of a judge of the Supreme Court. Okay, कि एतिकी वर्ष पय से जज हेबे एमति किछि tenure fix हेनी. Constitution has not fixed the tenure. Okay, he holds the office, however it makes following three provisions in this regard. कौन provision? He holds office until he attains the age of 65 years. तो तांगर minimum age किछि prescribe हेनी, but maximum age is 65 years. Okay, unless and until you are 65 you can continue as a judge. In 65 years you have to retire. Any question regarding his age is determined by such authority and such manner as provided by parliament. Okay. Second, he can resign his office by writing to the president. Okay, से कागु write माने लिखिबे तांको resignation letter to president. This is important. Okay, this is also important. This all these points you have to remember. Then he can be removed from his office by president on the recommendation of the parliament. Okay, this is resignation, this is removal. If he wants, he can resign by writing to the president, and he can be removed by the president also, but with the recommendation of the parliament. There is a procedure, impeachment procedure for judges also. Okay, we'll see what the procedure is, but एतिकी मन रखो कि recommendation दबो parliament and remove करिवे तांको president. Okay, तो resignation रे भी president, removal रे भी president, but removal रे recommendation दबो parliament. Right? तीनटा पॉइंट मन रखिया अछि तांकर maximum age limit 65, तांको resignation letter देबे से president को, and तांको remove भी करिवे president with recommendation of parliament. Okay, जदि statement थिबो he will be removed by president, it will be correct. Okay, जदि भी लिखा हैनी with the recommendation of parliament, still the statement will be correct. Then removal. Okay, केमिति हमें देखिबा. There is a procedure, okay, of impeachment. A act would achieve Judges Enquiry Act, which regulates the procedure relating to the removal of judge of the Supreme Court by the process of impeachment. Okay, there was a impeachment procedure for president also to remove the president. Similarly, there is a impeachment procedure for the judge of Supreme Court also. कौन से procedure? The removal motion signed by 100 members if it is from the Lok Sabha and 50 members if it is from the Rajya Sabha. Okay, to be given to the speaker in case of Lok Sabha and to the chairman in case of Rajya Sabha. तो first of all कौन तांको removal ପାଇଁ जो impeachment motion आसीबो जदि लोक सभा रे आसी 100टा मेंबर साइन करथिबार अछि एंड सेटा दिया हबो कागु स्पीकर को. जदि राज्य सभा रे आसी तांकर impeachment motion 50टा मेंबर साइन करथिबार अछि सेटा दिया हबो कागु चेयरमैन. Okay, this is the first step. Second कौन हबो? The speaker or chairman may admit the motion or refuse to admit. Okay, so it is the prerogative of the speaker. Either they will accept the motion or they will reject the motion. Okay, लोक सभा रे स्पीकर और राज्य सभा रे चेयरमैन से चाहिए एक्सेप्ट करि परिबे, से चाहिए रिजेक्ट भी करि परिबे कि ना हमें इम्पीचमेंट मोशन को हमें एक्सेप्ट करिवोनी. ओके, से पावर भी अछि. It is not mandatory. This also you have to remember. This is important. It is not mandatory. Okay, they may or may not admit. Then third, if it is admitted, जदि से admit करले speaker या तो chairman, then what? Then the speaker and the chairman is to constitute 3-member committee to investigate into the charges. Next step कौन से करिवे? 3 जणिया गोटे कमिटी को फॉर्मेशन करिवे जी कि तांकर तांको ऊपर जो चार्जेस लगा हेची ताकू से इन्वेस्टिगेट करिवो. ओके, से कमिटी रे की रहबे? The committee should consist one chief justice of or a judge of the Supreme Court. Okay, either chief justice or judge of Supreme Court, then chief justice of High Court. Okay, chief justice of High Court and distinguished jurist. Okay, just a second.
Okay, Chief Justice or a Judge of Supreme Court, Chief Justice of High Court, and a distinguished jurist. ঠিক ଅଛି, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କମିଟି ହବ। ଦେନ୍ if the committee finds the judge to be guilty of misbehavior or suffering from an incapacity, okay, these are the conditions, okay, a condition रे तमे गोटे सुप्रीम कोर्ट जज को impeach करि परिबो। Okay, so if the committee finds the judge to be guilty of misbehavior or suffering from incapacity, the house can take up the consideration of the motion। Okay, जदि committee पाइला तांकु दोषी either from guilty of misbehavior or suffering from an incapacity, then कौन हबो, से कमिटी से मोशन को कंसीडर करिवो। ओके, देन आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, स्पेशल मेजॉरिटी मींस एटी स्पेशल मेजॉरिटी कोन, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। ओके, तो से स्पेशल मेजॉरिटी रे बिल पास हबो, एन एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ द जज। ओके, से हाउस रे पास हबो, देन एटा नेक्स्ट हाउस को जीवो। ओके, देन सेटा प्रेसिडेंट को दिया हबो टू रिमूव द जज। फाइनली द प्रेसिडेंट पास एन ऑर्डर रिमूविंग द जज। ओके, सो दिस इज द टू कंप्लीट इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ ए जज। एटी प्रेसिडेंट कर कोन थाए, एटी गोटे अलगा स्पेशल मेजॉरिटी थिला प्रेसिडेंट कर इम्पीचमेंट पे। ओके, 2/3 मेजॉरिटी रे तांकू पास हेबार अछि बिल। एटी कोन होबे, 2/3 मेजॉरिटी नै, एटी टोटल मेजॉरिटी बट 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, बुझिलो इम्पीचमेंट तांकर प्रोसीजर कोन, पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकसभा रे 100 मेंबर, राज्यसभा रे 50 मेंबर से मोशन को आनियार अछि। ओके, सी आइदर स्पीकर या चेयरमैन को देबे। नेक्स्ट इज स्पीकर या चेयरमैन तक एडमिट भी करि परिबे, रिफ्यूज भी करि परिबे। जदि एडमिट हैला, स्पीकर चेयरमैन गोटे कोन करिवे, 3 मेंबर कमिटी बनेबे ताको इन्वेस्टिगेट करिया पई। ओके, जदि से कमिटी रे किए रहइबो, चीफ जस्टिस और ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस और ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट एंड गोटे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। जदि से माने ताको दोषी पाइले, ओके, आइदर गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम एन इनकैपेसिटी, देन हाउस कोन करिवो, से मोशन को कंसीडर करिवो, टेक अप करिवो, देन ताको स्पेशल मेजॉरिटी रे से हाउस पास करिवो, देन इट विल गो टू द नेक्स्ट हाउस। ओके, they also will pass with special majority, then it will go to the president, then president will pass an order which will have the final that removal of the judge। correct, तो इटा भी मन रख। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार। ओके, आज पर्यंत को भी जज को इम्पीच करा हेनी सुप्रीम कोर्ट रे, जेमती कि आज पर्यंत कि प्रेसिडेंट भी इम्पीच हेना गोटे पॉइंट थिला। सो दिस आल्सो रिमेंबर कि नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार। जनक नारे इम्पीचमेंट मोशन आस्थिला, बी रामास्वामी। ओके, बट इट वाज नॉट पास्ड इन द लोकसभा। एक्टिंग जज एटा एते इंपोर्टेंट नहीं। ओके, एक्टिंग जज, एडहॉक जज, रिटायर्ड जज किए हे परिबो कोन, जस्ट सिंपली लिखा हिची का को एक्टिंग जज, का को एडहॉक जज अपॉइंट कराई परिबो। ओके, दिस यू जस्ट तमे निजे पढ़ी दियो। देन सीट कोड हे परिबो सुप्रीम कोर्ट रो, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, but it is also authorized to the chief justice of India, he can decide। this also you remember, UPSC रे थरे क्वेश्चन आस्थिला एडा। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया to appoint other places or places as seat of Supreme Court, he can take decision in this regard only with the approval of the president। Okay, president रा approval रे CJI can decide, chief justice of India can decide कि Supreme Court रो seat आउ कोडे भी हे पारिबो। Okay, but right now according to constitution Delhi is the seat of the Supreme Court। एटा इंपोर्टेंट नहीं। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट एटा तुम पढ़ी दबो। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पाई, ओके, 5 जज बेंच हुए जदि किसी केस जोड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर डिस्कस हुए। ओके, तो 143 आर्टिकल अनुसार द बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 5 जज विल ऑलवेज डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ओके, मिनिमम 5 जणिया बेंच दरकार, बाकी केस रे 3 जण जणे एम सब करन। देन इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडा गोटे मन रखिबो, एटी केतरा पॉइंट अछि, व्हाट आर द इंडिपेंडेंस केमिति मेंटेन हुए सुप्रीम कोर्ट रो। ओके, सुप्रीम कोर्ट होची फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, एंड दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत थर एग्जाम रे आसी। सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इट्स नॉट प्रेसिडेंट बट इट्स सुप्रीम कोर्ट
who is the guarantor of the fundamental rights of the citizens and guarantor of the constitution. Therefore its independence becomes very essential for the effective discharge of its duties. Okay, जेहेतु ये गार्डियन फंडामेंटल राइट्स रो आउ guarantor fundamental rights रो गार्डियन constitution रो तो यार इंडिपेंडेंस मेंटेन करिया इट्स वेरी वेरी एसेंशियल. ओके, तो केमिति मेंटेन हुए पॉइंट बाय पॉइंट विल सी. Okay, what are the provisions which maintains the independence of Supreme Court? One is mode of appointment. Okay, the judges of the Supreme Court are appointed by the president, which means the cabinet in consultation with the members of the judiciary itself. Okay, तो जज मानकर जो अपॉइंटमेंट हुए प्रेसिडेंट करती बट फास्ट कंसल्टेशन माने किए दिए तांको ना सब सुप्रीम कोर्ट ही दिए जुडिशियरी ही दिए. ओके, दिस कॉलेजियम सिस्टम ही दिए. तो कौन है सी जेहेतु सिलेक्शन प्रोसेस रे किसी एग्जीक्यूटिव रो इंटरफेरेंस रहिलानी, जुडिशियरी इटसेल्फ इज अपॉइंटिंग द जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट. दैट्स व्हाई देयर इंडिपेंडेंस इज मेंटेन्ड. ओके, जदि एटे एग्जीक्यूटिव किंबा लेजिस्लेचर इंटरफेयर करूथांते देन इंडिपेंडेंस ऊपर तांकर आस्थांता. ओके, चैलेंज. So this is one. Second, security of tenure. Okay, they can be removed from the office by president only in the manner and on the grounds mentioned in the constitution. Okay, constitution रे जो ground mention है जो manner impeachment procedure mention है केवल से उपाय रे ही तमे जज को remove करि परिबो. No other way, and only by president. This ensure the security of tenure. Then fixed service condition, they cannot be changed to their माने तांके जॉइन हला बेले जहाँ तांको सैलरी अलाउंसेस अछि ताकू तमे छेड़खानी सेतिर करि परिबो नाही. ओके, एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड. व्हाट आर द एक्सपेंसेस? ओके, जहाँ भी खर्च हुए सेटा कोन हुए पार्लियामेंट रे इट इज चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड इट्स नॉट वोटेबल. पार्लियामेंट कैन नॉट वोट ऑन दिस. ओके, तांकर खर्च पई सैलरी बढ़ाया पई जहाँ भी हुए ना सेथिरे किछि वोट हुएनी. ओके, तो भोट हेले कौन हम किए तार सपोर्ट रे किए तार एग्नेस्ट दब सेमती तेणु भोट हुए टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी. देन फिफ्थ कौन कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड. ओके, को भी जज रो कंडक्ट ओके सी एमडी कला सेमडी कला कहि तुमे पार्लियामेंट या तो स्टेट लेजिस्लेचर रे को भी जज रो कंडक्ट को डिस्कस करि परिबो नाही टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी. ओके, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ओके, सी कोनसी प्रैक्टिस प्राइवेट प्रैक्टिस या गवर्नमेंट रे प्रैक्टिस करि परिबे नाही वंस दे रिटायर्ड फ्रॉम द जज. ओके, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जज. पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट मींस हम जानि छ कि डेरोगेटरी जदि कि किछि रिमार्क देला ओके कि डिसरेस्पेक्टफुल किछि काम करला देन सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश दैट पर्सन इटसेल्फ. ताको आउ कि पनिशमेंट दबनी से निजे ही तांकर निजर दोषी को पनिशमेंट देबे. Okay, it's not like if somebody will tell something disrespectful to the Supreme Court, Parliament will punish. No, Supreme Court itself will punish. Okay, ता कहउछन्ती contempt of court case. Okay, so निजे ही निजर दोषी को दंड दउछन्ती, so they are independent. Then freedom to appoint its staff, they are free to appoint their own staff. Its jurisdiction cannot be curtailed. Okay, तांकर जो jurisdiction अछि जो जेतकी एरिया पॉइंट सेमान तांकर जजमेंट दे परिबे ताकू केही भी कमे परिबे नाही. Only Parliament can extend. ओके, जो एरिया रे तांको पावर दिया है टू व्हाट फ्री एंड फेयरली तांके जस्टिस प्रोवाइड करिया पई ताकू तमे कमे परिबो नाही, केही भी कमे परिबो नाही. पार्लियामेंट ओनली कैन एक्सटेंड द सेम. ओके, जदि को एरिया रे तांकर पावर नाही पार्लियामेंट तांको एक्स्ट्रा देई परिबो. फॉर एग्जांपल रिट पिटिशन गुट अछि. ओके, से रिट पिटिशन ओनली फंडामेंटल राइट रो रिट पई सुप्रीम कोर्ट पाखरे पावर अछि. ओके, अदर रिट पई हाई कोर्ट रे पावर अछि. बट सुप्रीम पार्लियामेंट चाहिए अदर रिट पिटिशन रो डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट को दे परियो. सो इट इज वन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ पावर टू द सुप्रीम कोर्ट बाय पार्लियामेंट. ओके, बट केही भी तांकर जुरिस्डिक्शन को कमी परिबे नाही. नेक्स्ट, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. ओके, एग्जीक्यूटिव विल नॉट इंटरफियर इन द जुडिशियल प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशियरी. ओके, एग्जीक्यूटिव माने कोनसी जुडिशियल पावर नै परिबे नाही. Okay, so all these are to maintain the independence of judiciary. Okay, आठ 10टा पॉइंट थिला ताकू मन रखियो. तार भितरटा माने एक्सप्लेनेशन टा तुमको दरकार नहीं, जस्ट पॉइंट टा मन रखो, तार मीनिंग टा बुझो, दैट्स इट. ओके, एडा भी सेडा भी इंपोर्टेंट. देन जुरिस्डिक्शन, केतरा जुरिस्डिक्शन अछि कोन अछि देखिबा. जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल
court of appeal. ता उपरको ଆଉ କିଛି ନାହିଁ. So they are the final court of appeal. Okay, they are the final interpreter and guardian of the constitution. Okay, and guarantor of the fundamental rights of the citizens. हमें पढ़ले. It has advisory and supervisory power also. से प्रेसिडेंट को एडवाइस करती, जो केस रे प्रेसिडेंट तंको एडवाइस मागिवे से तंको एडवाइस करती. ओके, तो कौन सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन और पावर. ओके, दे हैव सो मेनी जुरिस्डिक्शंस. ओके, कौन कौन तार जस्ट मीनिंग देखिदेवा गोटे गोटे एग्जांपल नेकी. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट, अपीलाइट, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, constitutional interpretation and other powers. Okay, so one by one we'll see what is original jurisdiction first. Original jurisdiction माने कौन, just ମୁଁ तुमको meaning कहूची कि not by the way of appeal. Okay, you can go to them without any appeal. Okay, and they are exclusively, they have the jurisdiction to decide the case. Okay, for example, and no other court has that power to decide that case. For example, तीन प्रकार एटा अछि between the को केस रे a federal court, supreme court decides the disputes between different units of the Indian federation. कौन कौन सेटा between center and states. जदि किछि गोटे केस हैला सेंटर और स्टेट भितरे, otherwise center and any state one side ଆଉ बाकी स्टेट अदर साइड. आउ गोटे केस कौन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. जदि आंक भितर किसी झगड़ा है, डिस्प्यूट है, दीटा स्टेट भितर हो, सेंटर आउ को स्टेट भितर हो, या तो सेंटर दी तीन स्टेट आउ गोटे साइड रे आउ केतरा स्टेट. ए सब केस रे डिसाइड करियार पावर केवल सुप्रीम कोर्ट पाखरे अछि. आउ यू कैन हाई कोर्ट कैन नॉट डिसाइड. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. Okay, original that dispute will be decided by the Supreme Court. No other court can decide this kind of disputes. बुझिलो, एडा कहउछन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ए तीनटा सेंटर एंड वन स्टेट, गोटे पटे सेंटर आ गोटे पटे वन और मोर स्टेट, गोटे पटे सेंटर सहित किछि स्टेट आ अलगा पटे अलगा स्टेट्स, या तो बिटवीन टू स्टेट्स. ओके, एडा होछि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. तो कल्ले काइज in the above federal dispute, Supreme Court is exclusive and original jurisdiction. Exclusive means man kono, no other court can decide such disputes. Original means the power to hear such disputes in the first instances, not by way of appeal. Man एमती नहीं जे फर्स्ट तुम हाई कोर्ट गलो, हाई कोर्ट रो तुमको सैटिस्फैक्शन मिलला नहीं, तुम गलो सुप्रीम कोर्ट. नो, इट्स नॉट बाय द वे ऑफ अपील. डायरेक्टली तुम जीवो सुप्रीम कोर्ट. जदि दीटा स्टेट भितर किसी डिस्प्यूट हैला, डायरेक्टली से जीवे सुप्रीम कोर्ट. Okay, but सेइथरे भी किछि एक्सेप्शन अछि. Okay, there are certain cases where the original jurisdiction is not applicable. Okay, देखो एट देछि, एटा पढिबो. फॉर एग्जांपल मु गोटे तुमको कहछि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट. ओके, दिस इज नॉट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. धर एबे ओडिशा छत्तीसगढ़ भितरे हमर डिस्प्यूट अछि महानदी को नेकी. This is you cannot call as original jurisdiction. माने सुप्रीम कोर्ट नहीं छे, दीटा स्टेट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जिबे आउ कि हम डिसाइड करि परिबन. ओके, तो ए भला 10 एक्सेप्शन को छाडिले बाकी सब केस रे सेंटर स्टेट भीतर जदि डिस्प्यूट हला, ओके, दे विल डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज एक्सक्लूसिवली एलिजिबल टू डिसाइड दोज केसेस. ओके, आउ कोन हेथिया दरकार दि तीनटा कंडीशन कोन अछि कि जो केस तमे नेकी जीवो से केस किछि ना किछि ओटे लॉ या तो फैक्ट को रिप्रेजेंट करथवार अछि, किछि ना किछि ओटे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर थिबार अछि सेइतरे. ओके, आउ के जे कोनोसी प्राइवेट पर्सन जाय कि सेंटर या तो स्टेट अगेंस्ट रे सेवला केस सुप्रीम कोर्ट रे कर परिबोनी. दीटा स्टेट इन्वॉल्व हेथियार अछि, या तो सेंटर और स्टेट इन्वॉल्व हेथियार अछि. आउ से जो मैटरटा सेटा किछि ओटे कॉन्स्टिट्यूशनल या तो लॉ रिलेटेड मैटर हेथियार अछि. राइट, तो एटा होछि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. बुझिलो, कार डाउट अछि? व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट रो? बुझिलो, माने केस रो ओरिजिन जो केस, ओरिजिनल जो केस डायरेक्टली तुम सुप्रीम कोर्ट जाउछ, नॉट वे ऑफ अपील. ओके, डायरेक्टली माने तुम हाई कोर्ट की जाइनो कि कोर्ट की जाइनो, डायरेक्ट तुम केस नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पाखु गलो. सेटा किछि ओटे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर या किछि ओटे लॉ सहित इन्वॉल्व अछि, सुप्रीम कोर्ट ता पर जजमेंट दबो. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. रिट, रिट रो मीनिंग सिंपली होछि कमांड. ओके, माने सुप्रीम कोर्ट कमांड करिवो तुमको. फॉर एग्जांपल मोर किछि ओटे फंडामेंटल राइट वायलेट हला, मु सुप्रीम कोर्ट पाखु गली, तो सुप्रीम कोर्ट कमांड करिवो द अथॉरिटी को
कि एनश्योर करा आर ए जिनसटा कोन में वायलेट हला ता कहउछन रिट जुरिस्डिक्शन ओके देयर आर सम हम पढिथिले फंडामेंटल राइट चैप्टर रे सर्टेन रिट्स ओके हेबियस कॉर्पस मैंडामस ओके प्रोहिबिशन क्यू वारंटो सर्सियरी एटा पढिथिले मन थिबो हेबियस कॉर्पस माने इलीगल डिटेंशन जदि तुम कागु इलीगली डिटेन कर दिछो okay then supreme court will ask the authority ki why you have illegally detained this person okay why you have encroached in his areas of fundamental rights okay तो ए केस ओडारे इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट रे एक्सक्लूसिवली राइट्स अछि रिट जुरिस्डिक्शन पाई ओके फॉर एग्जांपल माने तार अर्थ होची कोन मोर जदी फंडामेंटल राइट वायलेट हैला I can go directly to Supreme Court without going to any subordinate court or high court. I can directly go to Supreme Court and file an writ petition. कि मोर ए fundamental right violate ହେଇଛି, you direct the authority. Right? It is simply a meaning. Supreme Court has देखो लिखा है original jurisdiction. Okay, in case of writ petition. Okay, which is related to fundamental rights. Okay. However, the writ jurisdiction of the Supreme Court is not exclusive. Okay, माने कौन the higher courts are also the high courts are also empowered to issue writs for the enforcement of the fundamental rights माने को कहली बुझलो मोर जदी fundamental right violate हला I can directly go to Supreme Court and file a writ petition but I can also go to high courts and file a writ petition okay माने एटा हाई कोर्ट रो जुरिस्डिक्शन रे अछि सुप्रीम कोर्ट रो जुरिस्डिक्शन रे भी अछि बट सुप्रीम कोर्ट रो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एथिबे कहउछि जे मु हाई कोर्ट न जाय कि भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाय परिबी ओके कारण बहुत सारा केस अच्छी तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाई परिबोनी तुमको तळ कोर्ट स्टार्ट करिया पड़िबो बट इन केस ऑफ रिट पिटिशन विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो बुझि पारलो हां आउ गुड कोन डिफरेंस देयर इज आल्सो अ डिफरेंस बिटवीन द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ओके कोन एडा भी बुझो एडा भी इंपोर्टेंट the Supreme Court can issue writ only for the enforcement of the fundamental rights and not for other purposes. Okay, but the High Court, on the other hand, can issue writs not only for the enforcement of the fundamental rights but also for the other purposes. Okay, तो फंडामेंटल राइट जो तुम वायलेट होची तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाई परिबो हाई कोर्ट भी जाई परिबो बट हाई सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट छोड़ा कोनोसी जिनसे तुम वायलेशन रे तुम रिट पिटिशन नेकी सुप्रीम कोर्ट जाई परिबोनी but apart from fundamental right also if certain rights are violated then the person can go to high court okay so high court ro writ jurisdiction is broader than supreme court बुझी पारला because supreme court ro writ jurisdiction is only limited to fundamental rights then appellate jurisdiction did am पढ़ले original jurisdiction writ jurisdiction third is appellate jurisdiction appellate jurisdiction माने simple meaning होची way of appeal माने हाई कोर्ट तुम कोटे केस रो फाइनल जजमेंट आसिला तुम सैटिस्फाइड हेलोनी तुम सुप्रीम कोर्ट को गलो सेडा कहउछन अपीलेट जुरिस्डिक्शन वे ऑफ अपील नॉट डायरेक्टली यू आर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट यू आर अपीलिंग द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट ओके तुम गोटे कोर्ट केस कलो फर्स्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट टू स्टार्ट कलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तापर गलो हाई कोर्ट तापर गलो सुप्रीम कोर्ट लोक जाउचंदी सैटिस्फाई न होला पुन जिबे आका बुझलो सेडा कहउछन अपीलेट जुरिस्डिक्शन इथरे कोन कोन अछि अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर रे तुम जाई परिबो अपील इन सिविल मैटर रे जाई परिबो अपील इन क्रिमिनल मैटर रे जाई परिबो स्पेशल पिटिशन गोट अछि माने जोटा कि को केस को माने कोन जुरिस्डिक्शन रे जाउनी गोटे स्पेशल केस ताकू तमे स्पेशल पिटिशन थ्रू रे भी सुप्रीम कोर्ट जाई परिबो ओके तो एटा होछ अपीलेट जुरिस्डिक्शन इथरे बेसी किछि नाही जस्ट पढि दबो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कोन सिविल केस रे कोन अछि क्रिमिनल केस रे कोन अछि सिंपली एतकी बुझो अपीलेट जुरिस्डिक्शन माने वे ऑफ अपील ओके देन फोर्थ होची एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हम पढिथिले प्रेसिडेंट चैप्टर की पढिथिले कि प्रेसिडेंट जदि चाहिबे इफ ही सीक्स एनी एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट हैज टू प्रोवाइड दैट एडवाइस ओके ताको छन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कागु से एडवाइस करिवे प्रेसिडेंट ओके ऑन द क्वेश्चन कोन एथिरे दीटा अछि डिफरेंस कोन ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस which is arisen or which is likely to arise okay a related jodi president kichi chahuchun advice supreme court debe second hochi on any dispute arising out of any pre constitution treaty agreement okay and engagement all these things a bishay jodi president kichi advice chahuchun then supreme court dabaku padibo advice okay एठी भी अछि कि
हाँ आउ गोटे जिनस कौन ए जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देवे प्रेसिडेंट को इट इज नॉट बाइंडिंग ओके प्रेसिडेंट चाहिए से एडवाइस को नहीं पारे न चाहिए नहीं न पारे द एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट देन ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने सिंपली मीनिंग बुझ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने जो माने गोटे केस चलची हैला सुप्रीम कोर्ट से रेफर करुची जे आमर जो 90s रे जो जजमेंट आसीथिला ए रिलेटेड आमे से जजमेंट रे जिनसटा कहिथिलु नहले वकील मान देखियो बेले बेले आर्गुमेंट रे कहंती तांगे रेफर करिवो गोटे केस रो जजमेंट को ओके कि ए बेंच रो ए जजमेंट रे आपण या कहिथिले से बेसिस रे सेमाने आर्गुमेंट करंती सेडा कहंती कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने कोर्ट रो रिकॉर्ड कोर्ट जो केस रे जहा जहा फैसला जणाउची सेडा रिकॉर्ड हेकी रहउची and that can be also used as an evidence okay that can be also used during argument ki in this case the court has decided like this okay advocate man argue karanti na ki Kerala high court ro ei decision ଶୁଣିଥିଲା ଏଇ ମସିହାରେ ଏଇ କେସ୍ ଉପରେ ଓକେ ତ ତାକୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଓକେ ତାକୁ ବି ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନେ ୟା ତ କୋର୍ଟ ଇଟସେଲ୍ଫ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ତାଙ୍କର ଫର୍ଦର ଫ୍ୟୁଚର ଜଜମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓକେ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ବୁଝିଲ लीगल रेफरेंस यूज करि परिबो कोर्ट एंड लीगल प्रेसिडेंट्स टाइप यूज करि परिबो ओके माने निजर ही जजमेंट को निजे ही यूज करा जाय फ्यूचर रेफरेंस पाई या तो निजर ही जजमेंट को जो एडवोकेट माने रेफर करंदी तांगर केस लढिला सेडा कहउछन्दी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ओके पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एडम बुझेली ओके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माने तमे जदि कोर्ट को डिसरेस्पेक्टफुल करी किछि कहिलो ओके को जज रो ऑर्डर माने फाइनल ऑर्डर को किछि माने डिसरेस्पेक्टफुल कलो या तो किछि कलो देन कोर्ट हैज द पावर टू पनिश यू ओके ता कहउछन्दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एथरे दीटा अछि गोटे होछि सिविल आ गोटे क्रिमिनल सिविल माने कोन जदि तमे कोर्ट रो ऑर्डर को मानिलनी कोर्ट किछि गोटे ऑर्डर देला फाइनल ऑर्डर तमे ताको मानिलनी देन सुप्रीम कोर्ट कोन करि परिबो से तुम ऊपर सिविल कंटेम्प्ट लगे पारिबो कि तुम तन मानिलनी विल टेक एक्शन ओके सेथरे फाइन हे पारे जेल हे पारे किछि हे पारे आउट होछि क्रिमिनल कंटेंट माने कोन तमे कोर्ट रो कोनोसी जज को माने किछि डेरोगेटरी लैंग्वेज रे पब्लिक रे किछि कहिलो या तो कोड आर्टिकल छापिलो तंग ना रे ओके माने बेसी ही हार्ड एक्शन तंग ना माने किछि गोट तंग अगेंस्ट तुम एक्शन नै गेलो ओके से केस रे तुम कोन देखो स्कैंडलाइजेस or lowers the authority of court okay or prejudices or interferes with the due course of judicial proceeding माने गोटे judicial proceeding चलची से मझरे तुम किछु गोटे डिसरेस्पेक्टफुल कथा कहलो ओके से केस रे सेमान तुम ऊपर एक्शन नै परिबे क्रिमिनल एक्शन ओके आ जदि सिंपली तुम तांगर ऑर्डर को मानलोनी देन सिविल कंटेम्प्ट ओके सिविल कंटेम्प्ट रे पनिशमेंट के कम क्रिमिनल रे पनिशमेंट के अधिक then power of judicial review तो जानिचो हला to examine the constitutionality of legislative enactment or executive order of both central and state government माने जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट रे किछि ऑर्डर हला किछि लॉ हला किछि एक्ट हला ताकू रिव्यू करियार पावर सुप्रीम कोर्ट पाखे अछि ओके जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओके सुप्रीम कोर्ट पाखे पावर अछि कि एनी एक्ट एनी लॉ एनी ऑर्डर of either central government or state government can be reviewed by the Supreme Court if somebody has filed an appeal okay or suo motu also suo motu man nije nije bi kari paribe okay? Then constitutional interpretation Supreme Court is the ultimate interpreter of the constitution that be important kiye constitution ro ultimate interpreter that is Supreme Court okay not president देन किछिटा डॉक्ट्रिन अछि एडार मीनिंग टिके नेट रे बाहर करके देखि दबो दिस यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर राइटिंग मोस्टली एडा प्रीलिम्स आसे नहीं ओके तथापि किछ देखि देथिबो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ओके व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस किछिटा तुम नेट रे आर मीनिंग बाहर करके देखि दबो अदर प्रोविजंस वगैरह इज नॉट इंपोर्टेंट ओके सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स वगैरह इज नॉट इंपोर्टेंट ओके ए टेबल टा टिके देखि दबो ओके इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट भितर कोन फरक अछि दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट जहा मु तुमको पढेली से रिलेटेड ही अछि एथरे किछि नुवा नै हला कोनटा हमर एठी अछि कोनटा तांगर सिटी नाही या तो कोनटा तांगर सिटी अछि कोनटा हमर एठी नाही समथिंग लाइक दैट हला फॉर एग्जांपल हम कहि दोछि हमर एठी इंडिया रे कोन अछि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अछि
कि सुप्रीम कोर्ट आमर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे पारिबे अमेरिका रे सेमली किछि नाही इट हैज नो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ओके आमर स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड तांकर स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वाइड बिकॉज दे फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वी फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ओके एमदी किसी डिफरेंस अच्छी देखिदेव द जुरिस्डिक्शन एंड पावर कैन बी एनलार्ज्ड बाय पार्लियामेंट पार्लियामेंट रा हमर पावर अछि सुप्रीम कोर्ट रो जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर को समान बढ़ाई पारिबे इट्स जुरिस्डिक्शंस एंड पावर्स आर लिमिटेड टू दैट conferred by the constitution एठी अमेरिकन कांग्रेस कैन नॉट इंक्रीज द jurisdiction and power of American Supreme Court okay बस that's it बस ये किसी इंपोर्टेंट देखियो तुमको इंपोर्टेंट आर्टिकल केटा मन रखियो फॉर एग्जांपल मु तुम कहि दउछि एठी ओके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होछि आर्टिकल 131 ओके specially petition 136 writ okay 139 power of president to consult supreme court 143 okay बस ये 4-5 टाइम मन रखिबो हला दैट्स इट चैप्टर सरला आमे देखिबा किछि कार डाउट अछि कि पचार और एल्स किछि क्वेश्चन मु आजि पे तो करनी प्रेसिडेंट माने सुप्रीम कोर्ट पे नाही बट ए प्रेसिडेंट गवर्नर पे किछि क्वेश्चन करथिले काली करि हलानी एबे कर दबा आमे कार किछि डाउट अछि कि फर्स्ट पचार सुप्रीम कोर्ट चैप्टर रे कार किछि डाउट अछि तमे आउ थरे पढ एबे मु तुमको देखो एमती हवा दरकार जे तमे थरे पढिछ मु तमरो थरे रिवाइज करली अगेन यू रिवाइज वंस ओके ताहले कोन हो कि तमरो कांसेप्ट ना पूरा माने भलसे मन रहि जो किछि कंफ्यूजन आसीबोनी देन जोडी तमे जतलो क्वेश्चन टेस्ट दोउछो प्रैक्टिस करूछो अगेन यू रेफर ओके कोन मु कहितली कोन तमे अंडरलाइन करिछो ताको रेफर करो मोस्टली जतकी जिंस अंडरलाइन करिछि ना 99% क्वेश्चन सेतु आसीबो ता बाहर आसीबोनी कारण मु भी एते थरा पढिछि एते एग्जाम देछि ता बाहर क्वेश्चन प्राय आसेनी ओके ओके जदि किसी डाउट नै विल 5-6टा क्वेश्चन अछि हम देखि देबा क्वेश्चन हला देखो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द एडा होछि हम जो पढिथिले गवर्नर और प्रेसिडेंट चैप्टर रो ठीक अछि 1 मिनिट टाइम दिया हला स्टार्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर आंसर करो माने मैसेज करो sending a report okay which are the following are the discretionary powers given to governor of a state okay discretionary power sending a report to the president of india for imposing president's rule okay appointing the ministers reserving certain bills passed by the state legislature for the consideration of the president making the rules to conduct the business of the state government आज ही पढ़ले गवर्नर चैप्टर में आज ही पढ़छन या ऑलमोस्ट ऑल समस्त ठीक आंसर देइछो कारण देखो तुम एटी केमदी करि परथांतो जदि तुमको जाना नै जदि ता जानिछो ठीक अछि सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इंपोजिंग प्रेसिडेंट रूल एटा तो करेक्ट जानिछो हला अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स एटा डिस्क्रिशनरी पावर ना निज तुमको जाना नै ओके एटा ठीक कंफ्यूजन रे अछि वन इज करेक्ट तो एटा ऑप्शन तमरो गला हला then reserving certain bills passed by the state legislature for consideration of the president of india
जदि एटा भी तुमको डाउट अच्छी तमें रख मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एटा कोठी भी डिस्क्रिशनरी पावर नथिला है ना नहीं तो या तुम काटो तो ये 4 गला माने ये ऑप्शन भी गला रहा 1 and 2 1 and 3 यू नो 1 इज करेक्ट ये दुटा भितर तुम जो कन्फ्यूजन होची अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स एंड रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके तो ये ऑप्शन भी हमें कोडी पढ़ी ना देखो रिमूवल डिसॉल्व ओके ये जिनस गुड़ा थिला तांकर डिस्क्रिशनरी पावर रे जदि तुमर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हे गला ओके जदि तुम मेजॉरिटी प्रूफ करि पारना इन दैट केस व्हाट governor can dissolve the state legislative assembly okay but in case of appointing the minister this is discretionary power he is bound to appoint the ministers as given by chief minister कौन करिवे तांको proposal देबे ना देबे minister मानकर and he is bound to appoint he has no discretionary power okay as recommended by the chief minister press governor is bound to appoint the ministers okay तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो आंसर विल बी 1 and 3 ओके एटा भी हम पढ़ी सी किछिटा बिल रिजर्व करि परिबे ओके फॉर द कंसीडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल discretionary power this power is not for president this is only for governor okay एटा भी हम पढ़ी कि there are certain constitutional discretionary power for the governor which is not for the president okay so answer is C, B you I think almost all are correct. Then question number 2. Consider the following statement. The president shall make rule for the more convenient transaction of the business of the government of India. Okay. President shall make rules for more convenient transaction of business of government of India and for the allocation among ministers of the said business. Second, all executive actions of the government of India shall be expressed, okay, to be taken in the name of Prime Minister. Which of the statement are correct? 1 minute time. Okay. तो किछ जण आंसर करिछ ए किछ जण आंसर करिछ डी ओके ए और डी गोटे मिनिट रो देखो ऑप्शन सी जो सी अछि President can make rules for more convenient transaction of business of union government and for allocation of the said business among the ministers. Okay. This is one of the executive functions of president. Okay. तो तमे केमिति कहउछ आंसर डी हबो बोली माने नहीं जो माने भी डी कहइछ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ president okay so this option is correct the president shall make rule for more convenient transaction of business of the government of India and for the allocation among minister of the said business काली हम पढै छथि ओके हां यस आर्टिकल जे भी मेंशन करछ ठीक अछि एटा होछि करेक्ट ओके तो 1 is definitely correct neither 1 nor 2 is
First of all, wrong. Okay, second, all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of president, right? So option 2 is wrong. So both is 1 and 2 is also wrong. This option is also wrong. The answer will be जो मैंने भी D କହିଥିଲ correct yourself ହେଲା. This is how ଏମିତି ହିଁ confusion ଆସେ ପଢିଲା ପରେ ବି ସେଥିପାଇଁ ବାର repeated revision ଦରକାର ହେଲା. Question number 3. Which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of the president rule in the state? Okay, जदि president rule proclaim hela state रे कोडा necessary नुह, necessary consequences नुह. Okay, which are not necessarily the consequences. One, dissolution of the state legislative assembly, is it necessary or not? Okay, dissolution. Removal of the council of minister, whether it is necessary or not. Dissolution of the local bodies, whether it is necessary or not. Okay, select the correct answer. बाकी मैंने आंसर करो. ओके, देखो यही ऑप्शन टाको बहुत पिला जानी पारुनो सेतपे मे भी आंसर करूनो कि डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज. ओके, एटा तुमको जणा नै ठीक अछि हैला. बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. एट जदि तुम गोटे आंसर जानिछ ना इट्स वेरी इजी टू एलिमिनेट. देखो डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एटा मु तुमको काली बारंबार कहिथिली. If there is a president rule in a state, the assembly will not dissolve. Okay, the assembly will not dissolve, the assembly will not suspend also. Only the council of ministers will be dismissed. काले हमें बार पढ़ी ना पर दिन पढ़ी इमरजेंसी चैप्टर रे कि if there is a president rule in a state, only the council of minister will dismiss. Okay, if the governor wants, then he can suspend or dissolve, but automatically the legislative assembly will not dissolve. But once the president rule is proclaimed, automatically the council of ministers will dismiss. Okay, the statement 2 is correct. Removal of the council of ministers is nothing but the dismissal of the council of ministers. Okay, the statement 2 is correct. And dissolution of the state legislature, first statement itself is wrong. The state legislative assembly will not dissolve. तो तुम जदि जानिलो वन ही करेक्ट रॉन्ग अछि तो तीनटे एक ऑप्शन रॉन्ग हे गेला जोड सेडी. तमे जानिया दरकार नै जे टू सॉरी हमर एटा ठीक अछि ना सॉरी गोटे मिनिट. ओके, एटा आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 3 रो से कोन पचारछि करेक्ट आंसर कोनटा कॉन्सिक्वेंसेस नुह से पचारुछि हैला. एटा होछि कॉन्सिक्वेंसेस. सॉरी मु तुमको भूल कर दिली से पचारुछि कोनटा कॉन्सिक्वेंसेस नुह. एटा होछि कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस. ऑटोमेटिक हबो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमूव हबो. ओके, द 2 इज करेक्ट. से पचारुछि रॉन्ग कोडा 2 इज करेक्ट. एटा देखो 2 अछि एटा भी ऑप्शन हबोनी एटा भी हबोनी एटा भी हबोनी. से पचारुछि नॉट. Okay, which is not necessarily the consequences. तुम जान लो 2 is a correct statement. तो जोड़ जोड़ 2 अच्छी ना सेटा सेटा आंसर हबोनी. So answer will be B 1 and 3. जदि भी तुम जानी न जे डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडी हबो कि ना हम पढ़ी भी नांदी कि एटा को बहिरे देई भी नै. Still you can find the answer. तुम जानि छ 2 हबोनी माने 2 कटला. आ जदि भी कंफ्यूजन थांता ना 1 is also wrong you know. तो एटा हबो आंसर रे. Okay, so this way you have to find the answer. Correct बुझिलो बे. Next, question number 4. If the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of particular state, okay, 356 कौन President rule, okay,
then the assembly of the state is automatically dissolved. The power of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of the parliament. Article 19 is suspended in all that state. Okay, the president can make laws relating to the state. Okay. ସମସ୍ତେ almost ଠିକ ଆନ୍ସର କରିଛ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଓକେ, ଦେଖ, the assembly of the state is automatically dissolved, ଏଟା ଏବେ ପଢିଲେ ହବନି। Okay, this statement will see article 19 is suspended in that state, ଏଟା କୋଉ କେସରେ ହୁଏ? national emergency, not in president rule. Okay, the president can make law relating to the state, parliament can make law relating to the state. Okay, it has the meaning he say na, power of legislature of the state shall be exercisable by the parliament. तो confusion होची parliament law बनेबो ना president बनेबो। Okay, तो आमे पढ़िथिले emergency chapter रे parliament will make law in the state list when there is a president rule. Parliament is entitled or parliament is authorized to make law for the state list also. Okay, president कोठी बनांती। Okay, all the authority of the state will go under the parliament. Okay, so option B will be correct. Last question, consider the following statement: no criminal proceedings shall be instituted against the governor. Okay, it aji padhala, no criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. Okay, तुम जी पचारथलो doubt, the emoluments and allowances of the governor of the state shall not be diminished during his term of office. Which other statement is correct? ଏବେ ବି ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି। ଓକେ, almost ସମସ୍ତେ ଠିକ ଆନ୍ସର କରୁଛ। ଓକେ, ଏଟା ତ ଏବେ ବି କହିଛି। ସୋ ୟେସ୍, କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ତମେ କୋଉ ବି କୋର୍ଟରେ କରିପାରିବନି ଯୋଉ ଦିନ ଯାଇ ସେ ଚେୟାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ତାଙ୍କର emoluments, allowances, all these things you cannot diminish. Okay, you cannot reduce during his term of office. जो facilities रे ସିଏ enter କରିଥିଲେ एटलिस्ट से फैसिलिटीज या तो ताठू अधिका तुमको तांको प्रोवाइड करियार अछि ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, यू कैन नॉट डिमिनिश और रिड्यूस। ओके, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। सो आंसर विल बी सी, करेक्ट स्टेटमेंट पचारछि। ओके, सो ये पांचटा क्वेश्चन थिला, मैं आंसर एटा दे देबी पीडीएफ तुमको। ओके।